हेलो एवरीवन, सो प्लीज़ वेलकम प्रिंकल स्टडी क्लासेस। काफ़ी लंबे समय बाद हम वापस आए हैं क्लास 11 के। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंटल साइंसेस के टॉपिक्स चल रहे थे, मैंने आपको 2 टॉपिक्स जो हैं आपको कंप्लीटेड करवा दिए थे। अब हम करेंगे चैप्टर 3, जिसके मैं क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा, जिसको आपने अच्छे से लर्न करना है, आपको तैयारी करनी है बोर्ड के लिए अच्छे से। तो चैप्टर 3 में हम आए हैं लेकर इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन एंड अडाप्टेशन। इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं और उसको किस तरह से लिखा जा सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सो प्लीज़ आप ध्यान से इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक इस वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें। लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस? Interspecific interactions are the interactions between the members of two different species. The interspecific interactions can be broadly classified into two categories depending upon the type of effect they have on the interacting organisms. वो जो two types है वो है positive interaction and negative interaction. Positive interaction, interspecific interaction in which one or both the species are benefited. Negative interaction, interspecific interaction in which one or both the species are harmed or have adverse effects. Question number 2. Write the points of difference between mutualism and commensalism. Mutualism, interaction where the entities involved are benefited. Commensalism ka, interaction in which one entity is benefited and the other is neither harmed nor benefited. Obligatory relationship, non-obligatory relationship. Both entities involved are benefited, only one species involved is benefited. Nutrients, defense, transport and shelter is a form of benefit. Nutrients, shelter, sport and transport is a form of benefit. Example, relationship between bees and flowers, humans and digestive bacteria. Example, hermit crabs use dead gastropods for shelter and millipedes travel on birds. Question number 3. What are positive interactions in a biotic community? Explain any one. Positive interaction, interspecific interaction in which one or both the species are benefited. वही जो पीछे मैंने करवाई है। उसके बाद इसके 2 टाइप्स होते हैं, कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म। उनमें से एक को जो है क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्लेन करना, हम एक को करेंगे, अगर दोनों बोले हो तो दोनों करना। Commensalism, interaction in which one entity is benefited and the other is neither harmed nor benefited. It is a non-obligatory relationship. Only one species involved is benefited. They are a form of benefit like nutrients, shelter, sport and transport. Example, hermit crabs use dead gastropods for shelter and millipedes travel on birds. Question number 4. What is a parasitism? Name the various types of parasites. Parasitism क्या होता है? It is an interaction in which one species is benefited and another species are harmed. The shelter sized species is benefited is called parasites. The various types of parasitism are endoparasites, ectoparasites, helloparasites, permanent parasites, semi-parasites, nest parasites, temporary parasites. Question number 5. Write a short note on scavenging. Scavengers are animals that find dead animals or plants and eat them. While they eat them, they break them into small bits. Example, flies, wasp and cockroach, etc. Question number 6. What do you mean by cannibalism? Cannibalism is the act of consuming another individual of the same species as food. Cannibalism is a common ecological interaction in the animal kingdom and has been recorded in more than 1,500 species. Question number 7. Define the term adaptations. It is structural, functional and behavior changes developed in a living organisms in a long period of time according to a particular environment. Example, tanning of skin, streamlined body of fish, estivation. Total 7 आपके short answer type questions से अब long answer type questions. First question, what is the significance of the territoriality? The 3 aspects of territoriality are important to consider when planning nursing care: a physical space of one's own, a personal space, and the territory of expertise or role. Territoriality serves 4 functions. It provides security, privacy, autonomy, and self-identity, all of which are important for well-being. Question number 2. Describe the various types of intraspecific interaction. The intraspecific interaction are those that occur organisms of the same species. 2 types of intraspecific interactions. First, cooperative interspecific interaction and second, competitive interspecific interaction. First, जो cooperative interspecific interaction वो क्या होता है? In cooperative interaction, the other organisms or members of the same species are helped
It includes mating, parental care, group formation, altruistic behavior, communication, etc. Next is competitive interspecific interactions. The interspecific competition takes place between two organisms of the same species. For example, two oak trees growing too close together fighting for sunlight and nutrients, or two male deer competing for mates. Question number 3 is, how is predation beneficial in the long run? Explain. Predation can be beneficial in the long run because it helps control the population of prey species. When predators hunt and feed on prey, it prevents overpopulation and maintains a balance in ecosystems. This balance ensures that resources are not depleted and allows other species to thrive. Question number 4. Describe different types of adaptations. Three types of adaptation. Structural adaptation. It is related to changes in organism, structure, shape, and size. Example, birds have beak to eat nuts on food. It is behavioral adaptation. It is related to how an organisms act or behave. Example, hibernation, winter sleep. Physiological adaptation. It is related to changes in organisms' chemical process. Tanning of skin while exposed to sun for a longer period of time. Question number 5th and the last question. Question number 5th, what are negative interactions in a biotic community? Mention their types, describe any one of them. Negative interaction, interspecific interaction in which one or both the species are harmed or have adverse effects. इसके 4 टाइप्स होते हैं, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, अमेंसलिज्म. अगर आपको चारों डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं तो आपको चारों के चारों डिस्क्राइब करने हैं. अगर आपको जितने डिस्क्राइब करने के लिए बोलेंगे उतने ही करने हैं. वैसे तो प्रीडेशन की आपको अगर डेफिनेशन लिखना है, आप हाउ इज बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन एक्सप्लेन जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो वाली डेफिनेशन, जो वो पूरा क्वेश्चन की डेफिनेशन कॉपी बनाकर आप लिख सकते हो क्योंकि वो प्रीडेशन के रिलेटेड ही है. उसके बाद कॉम्पिटिशन की आप कॉम्पिटिटिव वाली लिख सकते हो जो मैंने करवाई पीछे. पैरासिटिज्म की मैंने ऑलरेडी करवाई है. बचा अमेंसलिज्म. अमेंसलिज्म क्या होता है? अमेंसलिज्म होता है, इट इज इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशीज हार्म अनदर स्पीशीज विद टॉक्सिक सेक्रेशन कॉल्ड एलोकेमिक्स. Example, penicillium releases penicillium barley. Sunflower do not allow weeds to grow nearby. इसके एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड की हुई है पहले से. तो इससे हमारा जो है 3rd चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट होता है. हम मिलेंगे नए चैप्टर 4 के साथ बहुत जल्द. तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रिंकल स्टडी क्लासेस को. बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक पहुंच सके. और अपना खूब सारा प्यार दीजिए. कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ताकि आपके हर एक डाउट्स को जो है क्लियर कर सकूं. बाय.